Yeah, good evening, friends. Welcome to the session. कैसा रहा आज का दिन? Let's start. I think market more or less was in a good movement here. I'll also start the session on my mobile to see whether everything is working fine. Yes. कैसा रहा, Najib? Was it oh, bad? Sir, good evening. Yeah, good evening. Am I audible? Because at my end, good evening. Yeah, the tech check is showing everything is right, fine. But you see, I need your confirmation, friends. You have to participate a bit. If not, then I have to keep on checking my mobile. So Venkat says good today. धीरज how कैसा रहा धीरज? 23,800 तो निकला नहीं आज निफ्टी में. Manu GX9. Manu, are you from Bangalore, Manu? Okay. So more or less traders had a decent day today. देखिए फ्राइडे में आप एक चीज ध्यान रखो निफ्टी में बिकॉज ऑफ थीटा डीके ऑफ सैटरडे संडे मंडे मेजोरिटी ऑफ द टाइम आता है. या मनु यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बी रेगुलर दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं अभी मार्केट क्या है. बिफोर दैट आई रीड आउट द डिस्क्लेमर and I need to share my screen and I'll go it to my next screen. Yeah. So this is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. Let's see what the plan is for Monday. I'll write a detailed note also. Make sure you read it on the Substack. It is released exactly at 6 o'clock on Sunday where I cover all the sectorial indices. So more or less the trend to सबको पता it's sideways. बट जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना विच इज राइट नाउ अ की टेक्निकल इंडिकेटर जो सबको फॉलो करना उसको विपसॉ कर रहा है. नाइदर मार्केट इज ट्राइंग टू नाइदर मार्केट रेंज के ऊपर निकल रहा है रेंज के नीचे निकल रहा है. सो व्हाट ऑल दिस इज लेट्स गो टू स्ट्रेट टू अ प्राइस चार्ट्स and the platform is Stocko Incred Money. So this is Nifty. Okay, निफ्टी अभी भी रेंज से बाहर नहीं निकल सक रहा है. आज भी जैसे हमने मॉर्निंग में देखा था कि मार्केट में एक 23,800 ओआई बेस रेजिस्टेंस भी था और प्रीवियस हाइज भी था. सो अभी भी मार्केट इज जस्ट स्टक इन दिस रेंज. रिमेंबर दैट. और ये रेंज में देखिए वन ऑफ द बिग थिंग्स यू हैव टू सी विद इन दिस रेंज इज द एवरेज विच इज द 50-day मूविंग एवरेज. If I now go and plot my 50-day moving average, morning you saw strength the moment market crossed the 50. But in ऐसा जो whipsawing होता है ना तो from a trading perspective you get good volatility as a day trader. So you see the slope जो है ना 50-day moving average का the slope is very important. I had pointed out to you earlier also. The slope of the 50 DMA is still slanting down. So let's give it a day or two, at least on a Monday, and let's see whether it's breaking the range and it's closing above the 50 DMA. अभी तक देखिए निफ्टी ने एक बार 50 DMA यहाँ पे तोड़ा. So it went below the 50 DMA somewhere here. After that, market has made an attempt to come to the 50 DMA. 50 दिन के एवरेज के पास आया. Try to make it, failed 3 times. Today exactly it has closed at 50 DMA. So हमें ये तो पता चल रहा है there is a big fight within the bulls and the bears within the consolidation at the 50-day moving average. Now, जब तक ये consolidation निकल नहीं रहा है, we can't see further up moves. Let's wait for it. Patience is the key right now. Till that point of time, keep trading the range. Everybody clear about the technical picture? Either give me a yes or a no. I'll wait for your yes or a no.
आई गॉट यस फ्रॉम धीरज। और ये ड्रीम मार्केट है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, specifically if you are a credit spread trader or a seller of options with a hedge in place. Now, इसके बाद हम options का डेटा देखते हैं। How many of you are watching trending OI? आज मार्केट जैसे ही खुला ना, अगर आप ट्रेंडिंग ओआई में देखते मेरे ये सेटिंग्स है, तो थ्रू आउट द डे दे वर सेलिंग इन पुट्स, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये नेगेटिव हो गया करीब, जस्ट सी ओवर हियर, sentiment changing over here, market below this level, and that's where the decline came in. So, and see, again one more thing I want to highlight, when market was at resistance 23,838, so आपका strike कौन सा हो जाता है? So your strike is 23,800. So I'll go to 26,800 and come to the bottom chart over here. See, at 26,800, right from the market open, जब से market खुला, there were sellers in call. Are you able to see this, friends? एक brief crossover आया यहाँ पे 1 बजे से लेके 2 बजे तक. Again, the crossover turned negative at 2 o'clock. And I guess that's the point where the decline came in at 2 o'clock. Did you anybody notice this? This is what I've highlighted you as a day trader. Whenever prices is close to a support or a resistance, check the strike price uh, uh, option chart. So Dheeraj says yes, 2 p.m. is the point. Okay, and just see what happened at 2 p.m. From where market जो crack था वो कहाँ से start हुआ? Let's go and check it out. Can you see? वो जैसे आपको crossover दिखा ना, somewhere around 2, around here. Can you see this? फिर मार्केट ने सरेंडर कर दिया. सो जैसे मैं बोलता हूँ, ये मार्केट इज नॉट दैट इजी टू ट्रेड, बट इफ यू हैव अ प्लान, यू नो फ्रॉम वेयर एंड व्हेन दोस टर्न्स आर कमिंग. 2 o'clock इज समवेयर हियर, यहाँ पे. सो आई जस्ट पुट एन एरो. सो वेयर इज माय एरो? आई थिंक आई हैव, नो, यस. सो दिस इज 2 o'clock. देख रहे हो आप, 2 बजे यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग ओआई ने दिखा दिया था कि 23,800 में हैवी कॉल राइटिंग हो रहा है. Now everybody got it, how to pick up your momentum intraday with trending OI and the options data. जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एज अ डे ट्रेडर और ऑप्शंस डेटा इग्नोर करते हो तो सौदे सही नहीं जाएंगे. तो प्लस मॉर्निंग में तो हमने देखा ही था 23,800 क्रॉस करना ये हाई टफ है. तो मोर और लेस मार्केट behaved on an expected line. So right now let's go and check it out. How many of you observed whatever we talked today in the morning session? अभी क्लोजिंग में हम जाके ओआई की पोजीशंस देखते हैं. या इफ यू डोंट फॉलो फ्रेंड्स देन इट्स टफ. If you don't follow, then trading will be tough. That's why the sessions are there. Yeah, Dheeraj says 2 p.m. So Dheeraj noticed this. अभी ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन क्या है, पहले हम ओआई स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं. देखिए अभी भी फाइट इक्वल है बुल्स और बेयर्स में. अब देखिए दोनों टावर साथ साथ ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 15.58 करोड़ और पुट का ओपन इंटरेस्ट है 15.86 करोड़. तो थोड़ा सा पुट में ओपन इंटरेस्ट हाई है, बट इतना भी बहुत हाई नहीं है कि इट्स इन फेवर ऑफ द पुट राइटर्स. दोनों इक्वली बैलेंस्ड है. सो मार्केट अगर आप देखिए जाए, ये क्यूमुलेटिव है. क्यूमुलेटिव मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट मार्केट का. तो उसमें मार्केट एक रेंज में है और ये रेंज में बोथ द बुल्स एंड द बेयर्स आर इक्वल. किसी का पलड़ा भारी नहीं है यहाँ पे. गेटिंग इट एवरीबॉडी? ये टावर किस तरह एक्सपैंड करता वो हमें ट्रेंडिंग ओआई इंट्राडे में दिखा देगा. दैट साइड वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट. गिव मी अ यस इफ यू हैव गॉट इट. इफ यू डोंट आंसर फ्रेंड्स, मुझे पता कैसे चलेगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू इन अ प्रॉपर वे. Yeah, I'll wait. Okay, I got it from today only. Dheeraj, yeah, Venkat is also saying yes. अभी जाके देखते कौन से स्ट्राइक में ओआई मैक्स बिल्डअप है, जो आपका भी ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता अगर क्रॉस हुआ तो. इफ इट्स क्रॉसेस देन इट बिकम्स अ ब्रेकआउट पॉइंट. सो आई विल गो टू माय ओआई प्रोफाइल.
See on my OI profile 23,800 पे कॉल राइटिंग है, नो डाउट अबाउट इट, 76 lakhs, बट ये एक रेजिस्टेंस भी है, रिमेंबर दिस इज द प्राइस रेजिस्टेंस अलोंग विथ OI रेजिस्टेंस, गेटिंग इट एवरीबॉडी। अगर ये हाई निकल जाता फिर देखिए बीच में कहीं पे भी OI नहीं है, सीधा OI है 24,000 पे। एवरीबॉडी सीइंग दिस टिल वी डोंट गेट फर्दर साइंस। यस नो। और अगर पुट में देखते हैं तो आज का जो गैप अप है उसके नीचे पुट में, तो देखिए पुट में वे डाउन है, पुट में इट्स वे डाउन विच इज समवेयर अराउंड 23,500, जो कि ये बॉटम को पूरा ले रहा है। सो मार्केट का जो एक रेंज है हम लोग एकदम मिडल पे, अगर 23,800 इफ इट गिव्स अस अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज एट 23,800 वी कैन सी एन अपटेक टुवर्ड्स दिस गैप ओवर हियर, चाहे वो 24 हो चाहे 23,900 हो, एटलीस्ट द अपटिक विल बी देयर, बिकॉज देन यू व्हाट हैपेंस इज एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जिनके फ्यूचर्स में स्टॉप लॉसेस लगे हैं लास्ट हाई पे। जनरली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी प्लेस अ stop loss at the last highs. That's what the OI is also showing us. The call writers are there at 23,800. If that level gets breached or triggered, then short covering is there, plus breakout buyers will come in and might take market up to 24,000 levels. So that's how the charts are positioned. Do you agree, disagree, friends? As I said, मैं कोई expert नहीं हूँ. Whatever is seeing in context of price action and open interest, I'm just pointing that out to you. Right? Or on the downside, this gap is now the key, and 23,500 is your support. Just keep this much in mind. After that, let's go and check gift nifty, बैंक निफ्टी। देखिए आज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, वेरी निफ्टी क्लोज एट द डेज लो, बैंक निफ्टी आफ्टर इनिशियल डिप क्लोज एट द डेज हाई। So what does this signify? To me, nothing. We are still in the range. With intra-week volatility, there is a gap over here, right? Bank Nifty, this is the gap over here, यहाँ पे. So the next level for Bank Nifty is somewhere around 54,500 levels. ऊपर में. See, intraday हम Monday को morning को करेंगे, not now. We'll just see the structure right now. एंड देखिए बैंक निफ्टी में 50 दिन नहीं, हम 20 दिन का भी एवरेज लेंगे ना, तो बैंक निफ्टी इज बिलो द 20-day एवरेज। इसमें होता क्या है ना, जब भी गिरावट का दौर रहता है, व्हेन देयर इज अ बेयरिशनेस बिलो 20-day, मार्केट ट्राइज टू कम एंड टच द 20-day में, वहां पे हमें पता चलेगा विल दिस पुल बैक एक्सटेंड फर्दर और वी हैव सीन अ हाई। एवरीबॉडी गेटिंग इट? तो वो बैंक निफ्टी में आपको 20-day मूविंग एवरेज पे पता चलेगा, और 20-day मूविंग एवरेज जो रहता है ना, वो मिडिल बोलिंगर बैंड है, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट टर्म में मोमेंटम लाइन भी बोलते हैं। तो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। So I'm not getting Chetan your question. Let me see if my phone has got hang. So I am just come closer to my second screen. So Chetan says in Nifty as per ATR at 80% level, it acted as a resistance. Brilliant. You are working very hard on your trading, calculating ATR. That's great to know, Chetan. सो बैंक निफ्टी में ये 20 दिन का एवरेज पे ध्यान रखना, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा भी है। देखिए ये ब्रेकआउट अगर होता भी है प्राइस 54,400, देन एवरेज इज 55,600, तो क्या 200 पॉइंट ऊपर ही सेलर बैठा है। So till I don't get a close above that, I would consider this as a pullback. You had earlier also. पहले भी बीच में एक दो दिन आया था. It had a pullback till the 20 DMA and fizzled out. Now again it's heading for the same sort of a price action. If it stays close above 20 DMA for a day or two, तब जाके हम तेजी में आ सकते हैं. तेजी में in the sense the pullback can extend further. Apart from this, the chart pattern which we are following on Bank Nifty is that of a falling channel. Why? Because we got two highs and we got two lows. So again देखिए छोटे जो ब्रेकआउट आते हैं, आज जैसे 500 पॉइंट बढ़ गया, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को फिर से बढ़ जाए,
See, nothing is happening. We are just stuck in this channel. एंड विद इन दिस चैनल शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है आवरली चार्ट्स पे वगैरह, तो वहां पे एक और फिर गिरना बंद हो जाता है। और मार्केट जनरली क्या होता है, एक दो दिन गिरना बंद हो जाता है तो शॉर्ट सेलर्स टायर्ड हो जाते हैं, तो शॉर्ट्स बंद हो जाते हैं, बायर्स को कॉन्फिडेंस आता है। दोज आर द रीजंस फॉर द पुल बैक टू कम एंड वी आर सीइंग दैट पुल बैक राइट नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? I'll wait for your yes or a no, friends. So let this pullback happen. And pullback में upper end of the channel is going to be my crucial levels. So market is doing nothing, gyrating in the range. एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, likely to continue for some more time till we don't get any further evidence. So now there is a base over here, there is a gap over here. The gap was filled. Now let's see what next. So the pullback is on, and within this channel देखिए आपको क्या करना है ना, ये जो range है ना, यहाँ पे एक line बना दो. If it breaks this, then yes, there is a price breakout for 200 points, nothing more than that. देखिए अभी आपको फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे आ रहा है, ट्रेडर कोई भी ब्रेकआउट आप अच्छा पकड़ लेते हो तो 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, एंड अगेन यू सी अ डिप डाउन। यू नो व्हाई? बिकॉज देखिए जब मार्केट ऐसा स्ट्रांगली गिरता है ना, तो हर एक 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन्स और सप्लाई जोन्स या सेलर्स बैठे रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? So this frustration will stay with you because अगर डिक्लाइन बहुत स्ट्रांग है तो पुल बैक में जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, उनको भाव मिलता टू एग्जिट एट कॉस्ट। रिमेंबर दैट। सो ब्रेकआउट्स आर ऑलवेज एंटरिंग इनटू अ रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे एक मोमेंटम फिजल आउट होते हुए दिखता है। सो देखिए मार्केट का जो अभी है कैरेक्टर, हमें वो कैरेक्टर में मार्केट को ट्रेड करना है। सो यू हैव टू गेट अ हैंग ऑफ द प्राइस चार्ट्स। आप जान लो भाई हर 200, 250, 300 पॉइंट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, वो फॉलो अप मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स डिलाइट मार्केट नहीं है, इट्स अ डे ट्रेडर्स डिलाइट मार्केट एंड ऑप्शंस डिलाइट मार्केट राइट नाउ। बिकॉज जो इस्टेब्लिश ट्रेंड है, आप ग्राफ ही देखो सर, मेरे सामने भी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, एक परफेक्ट फॉलिंग चैनल में मार्केट जा रहा है, and this channel is likely to hold for some more time. So market, the consolidation continues with a negative bias. In between we are seeing a bounce or a pullback, and right now also we are into that such price action of a pullback. Apart from this हमें ट्रेंडिंग, हमें OI भी देखना है. So I'll go to बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में मैं अपना OI प्रोफाइल देख लेता हूँ. बैंक निफ्टी में स्टैडल राइटर्स काफी स्ट्रांग है करंट भाव पे 54,000 पे। कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 12 लाख, पुट में ओपन इंटरेस्ट है 13 लाख, मोटा मोटी सेम है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एटीएम पे शॉर्ट स्टैडल ट्रेडर्स रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 55,000, विच इज आई गेस quite high from the current level. बीच में एक resistance आ रहा 54,500, which is somewhere around this high. ये जो हाई पकड़ के कॉल राइटर्स खड़े। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए प्राइस एक्शन पे अगर ओआई नहीं मिला के काम करोगे तो ऐसा वोलेटाइल मार्केट में आपको तकलीफ होगी। रिमेंबर दैट। सो लेट्स सी क्या बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट देता है हमें which is above 54,500 or this rally is only good enough till that point. Previously दो बार यहाँ से घूमा है मार्केट, वेट एंड वॉच करना है, बट विद इन अ रेंज market is just trying to show intraday swings, intra week swings. No trending move as of yet we can see right now. Yes, if nifty breaks the consolidation, you can see an uptick of 200-300 points. Yes, possible. Same on nifty, same on bank nifty. So ये ब्रेकआउट को मैं स्पाइक्स बोलता हूँ, नॉट अ फॉलो अप मोमेंटम के 10-15 दिन तक मार्केट ऊपर जाएगा जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। बिकॉज 20 दिन के एवरेज के ऊपर नीचे है बैंक निफ्टी इज बिलो 20 डीएमए एंड 50 बोथ। प्लस जो निफ्टी है वो 50 डे विपसॉ करती है, दैट्स विपसॉ में क्या एक कभी शार्प ब्रेकआउट आ भी सकता है, बी अवेयर ऑफ इट। And the micro part, Delium 8:45 in the morning, we will try to cover. Plus, I'll write in detail in the Substack note weekly, which you'll get in your inbox at or around, or you can visit Trading with Stocko on Substack channel.
at 6 o'clock evening on Sunday. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Yeah, if any other questions, let me know. Dheeraj says 20, traders are not giving likes. Dheeraj, what can I do? Either they are not liking the session, so they are not giving the likes. Fine, Dheeraj. Yeah. So thanks, friends, and have a nice day, everybody.